ڈپٹی چیئرمین ٹی ڈیپ، ممتاز کاروباری شخصیات، محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم، دوپہر بخیر۔ میرا نام شیخ سلطان رحمان ہے اور میں FPCCI ہیڈ آفس کراچی میں بطور کوآرڈینیٹر خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اس سے قبل 2020 میں منتخب نائب صدر کی ذمہ داریاں بھی نبھا چکا ہوں۔ آج کی اس پروقار تقریب کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرے لیے یہ نہ صرف نہایت خوشی کی بات ہے بلکہ باعث اعزاز ہے کہ میں پاکستان کے سب سے کم عمر وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، جو کہ پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کے مضبوط امیدوار بھی ہیں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب روایت پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ میں جناب فرحان نسیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ فرحان نسیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ میں یہاں یہ بتاتے ہوئے نہایت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی دو نامور شخصیات میاں انجم نثار حال ہی میں سارک کے نائب صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے خرم طارق سعید کاسی کے نائب صدر منتخب ہوئے ہیں۔ یہ نہ صرف بزنس کمیونٹی کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ عرفان اقبال شیخ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Honorable Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Minister for Foreign Affairs, respected provincial ministers Nasir Hussain Shah Sahab, Sayyid Ghani Sahab, Jam Ikramuddin Sahab, Murtaza Wahab Sahab, Mayor of City of Karachi, MashaAllah, Zubair Motiwala, Chairman of TDAP, Mr. Suleiman Chawla, Senior Vice President, Mia Anjum Nisar, Vice President SARC and former President LCCI, FPCCI, all Vice Presidents and all former Presidents, Khwaja Shahzeb Akram, former Senior Vice President FPCCI, Honorable Ministers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As the President of FPCCI, Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry, I extend a warm welcome to the esteemed Foreign Minister of Pakistan, Mr. Bilawal Bhutto Zardari Sahab. Pakistan stands at the cliff of change, necessitating revolutionary measures to catalyze growth and position itself as a leading nation on the global stage. Representing the business community, I firmly believe that exports are the foundation of our economic prosperity. It's a matter of concern that Pakistan exports have stagnated between $20 to $30 billion for the past 2 decades, when compared with India's export of $670 billion and even Bangladesh surpassing us. It
underscores that urgency for change. FPCCI established the Policy Advisory Board in 2021. The board's collaboration with the Ministry of Commerce has been instrumental in shaping trade agreements negotiations, furthering Pakistan exports opportunities. We take immense pride in our proactive involvement in landmark trade agreements such as the Pak GCC FTA, Goods and Services, Pak Malaysia FTA, Pak Indonesia FTA, and Pak UAE CEPA. Our unwavering commitment is evident in the comprehensive negotiation papers developed for the ministry, a conclusion of extensive stakeholder discussions and in-depth research. Pakistan can enhance ties with African nations by focusing on mutual economic ventures, promoting cultural and educational exchanges, and collaboration on health and security. Environmental cooperation targeting climate change, and active engagement in regional forums. Like the African Union, will fortify the bond. Additionally, tapping into the Pakistan diaspora in Africa can foster closer relationships. Intra-regional trade metrics reveal that South Asian nations predominantly trade with Europe, North America, and East Asia, and only 5% of their trade within their region, compared to ASEAN's 25% effective free trade agreements. Like an optimized SAFTA could boost intra-regional trade in South Asia, a region with 1.7 billion consumers. Furthermore, supporting startups and SMEs, which comprise 96% of Asian businesses and provide two-thirds of its private sector jobs, can spur job growth and innovation. Though they currently face challenges in accessing finance. Foreign Office previously requested FPCCI to host SCO conference, but it was later postponed. It is requested if the Foreign Office may now resume and conduct the conference. FPCCI has already sought funding and ready to host the conference. And finally, I want to thank especially for Mr. Khalid Amin and Shabir Mancha for their tireless efforts for the approval of this building plan. Thank you very much. बहुत शुक्रिया इरफान इकबाल शेख साहब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मियाँ अंजुम निसार साहब, साबिक सदर FPCCI और वाइस प्रेसिडेंट सार्क से वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अंजुम निसार साहब। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Mr. Bilawal Bhutto Zardari Sahab, Minister for Foreign Affairs, Provincial Ministers, Mayor of the city, prominent businessmen, business leaders, members of FPCCI, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. मैं समझता हूँ कि आज एक बड़ा खूबसूरत दिन है और बड़ा यादगार दिन है इन द हिस्ट्री ऑफ FPCCI कि माशाल्लाह इस फेडरेशन में माशाल्लाह यकीनन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी तशरीफ़ लाई थी मोहतरमा। जब आप आते हैं तो पुराने जो हमारे बुज़ुर्गों को देखते हैं जो उस वक्त एक्टिव थे, काम कर रहे थे, उनमें जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम, और आज माशाल्लाह आज आप तशरीफ़ लाए हैं। इट्स अ ऑनर फॉर FPCCI और अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथों से आज एक और बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने आपको टाइम तो बहुत कम मिला, लेकिन मेरे ख़्याल में जितनी अपनी एक्टिविटी विद इन अ स्पैन ऑफ 15 months शो की, दैट शोज़ के इंशाल्लाह वी ऑल हैव ए होप इन यू सर।
اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں آپ پہ مزید بڑی ذمہ داریاں ملیں گی اور انشاءاللہ آپ ان ذمہ داریوں کو مزید اچھے طریقے سے عہدہ برآ ہو سکیں گے. آپ یہاں تشریف لائے بزنس کمیونٹی کے اس فورم پہ سر. نیچرلی کچھ پرابلمز میں آپ سے عرض کروں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں گزارش کر دوں. سب سے پہلے تو جناب میں خالد امین صاحب کا اور شبیر منشا صاحب کا ان کے ہارڈ ورک پر ان کو جو ہے مبارکباد دوں گا, اور ساتھ جناب سائیں ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہیں, دو از ناٹ ہیئر, اور ان کی اور منسٹر صاحبان کے بھی جو اس میں یقیناً بڑی پازیٹیوٹی تھی کہ وہ سارے جو مناقشے کے مراحل تھے اور جو چند مشکل مراحل تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے حل ہوئے, اور آج انشاءاللہ ایک عظیم عمارت انشاءاللہ جو آج جس کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور آنے والے سالوں میں انشاءاللہ یہ مضبوط عمارت کھڑی ہوگی, جہاں سے بزنس کمیونٹی کی آواز اٹھے گی, اکنامکس کی آواز اٹھے گی, معیشت کو بہتر کرنے کی انشاءاللہ آواز اٹھے گی. ہم سے پہلے دوستوں نے اپنا رول پلے کیا, ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اینڈ دس از دا وے تھنگز آر سپوز ٹو گو آن. سر مراد علی شاہ صاحب نے, چیف منسٹر صاحب, آج وہ یہاں نہیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دھابے جی جو آپ کا جو ایک پروجیکٹ ہے جس کو ریسنٹلی آپ ہی نے وہاں بھی سنگ بنیاد رکھا, ایک بڑا اچھا کام ہے. وی آل نو دا لینڈ ان کراچی از ویری ایکسپینسو, اور اگر ہم نے انڈسٹری لگانی ہے دین وی نیڈ اے چیپر لینڈ, اینڈ گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے انوائرمنٹ پیدا کریں تاکہ انڈسٹری لگ سکے. انڈسٹری لگے گی, ٹیکسیشن اینڈ دین فیڈرل ٹیکسز بھی آئیں گے, پروونشل ٹیکسز بھی آئیں گے, اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ پھر آپ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری گورنمنٹس کی ہوتی ہے کہ روزگار مہیا کرنا, تو وہ ذمہ داریاں بھی پوری ہوں گی. سو سر میری گزارش ہوگی کہ چیپر ریٹس پہ یہ انڈسٹریل لینڈ دیا بھی جائے اور جلد سے جلد اس کو ڈیولپ بھی کیا جائے, کیونکہ اگر ہم اپ کنٹری سے اگر کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں, را مٹیریلز کراچی سے لے کے جائیں گے اینڈ دین وی برنگ اٹ بیک ٹو کراچی, تو بہت سارے ہمارے جو ایکسٹرا چارجز آ جاتے ہیں. تو اگر قریب ترین ایریا میں گڈز آئیں گی اور یہیں سے ایکسپورٹ ہوں گی تو ہماری کاسٹ ایفیشینٹ بھی ہم ہوں گے. سو ہماری گزارش ہوگی کہ کائنڈلی سر اس طرف آپ خاص توجہ دیجیے گا. باقی سر انفلیشن آپ کو پتہ ہے کہ اٹس مطلب ہے یہ بھی ایک ریکارڈ ہے, اینڈ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے ہمارا بہت مہنگا ہے. اس کاسٹ پر ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی. ہیونگ اے مارک اپ آف 22%, دین جو الیکٹریسٹی پرائس ہے یہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے کمپیٹ نہیں کر سکتے. اور جو ہمارے پاس جو پچھلے ہمارے پاس جو کچھ بینچ مارک تھا جو ہم نے ایکسپورٹس کی, اس سال بھی ایکسپورٹ کم ہوئی اور مزید بھی کم ہونے کے اندیشے ہیں. سر میری گزارش ہوگی کہ ہم جب تک اپنے فنڈامنٹلس کو ٹھیک نہیں کرتے, جس میں آپ کی ان پٹ کاسٹ ہے, دیٹ از مارک اپ, دنیا میں ایسا مارک اپ کہیں بھی نہیں ہے جتنی کاسٹ ہم بیئر کر رہے ہیں. سر وی ہیو ٹو کمپیٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ, اور کوئی بھی ہمیں صرف پاکستانی پروڈکٹس لے کے جائیں گے تو ہمیں اس کا ایڈوانٹیج نہیں دے گا. وی ہیو ٹو کمپیٹ ود دیٹ, وی ہیو ٹو فائٹ ود دیٹ ود دیم سر. اور پھر آپ کی بجلی کی پرائس, اینڈ دین سر آج کل ایل سیز کے مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, کیونکہ پروڈکٹیوٹی 1/3 ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے. اور اگر یہی حالات اس طرح چلیں گے تو مجھے سر ڈاؤٹ ہے, ہم بھی سر اپنی معیشت کے حوالے سے چلیں, اچھے برے ڈاکٹر ہی کہہ لیں, ہمیں بھی مان لیں, اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ معاملات اس طرح چلے تو ود ان 8 or 6 months 6 to 8 months سر بہت ساری انڈسٹری کلوجر پہ جائے گی. سر اس کا کچھ نہ کچھ سوچیں سر. میں سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بڑے لیڈر ہیں اور جتنے بڑے خاندان سے آپ کا تعلق ہے, اور ماشاءاللہ ہمیں بڑی امیدیں ہیں کہ جیسے یہ الیکشنز کمپلیٹ ہوتے ہیں اللہ آپ کو اس سے بڑی پوسٹ دے, اچھا بڑا منصب دے, اور وی وانٹ ٹو سی یو کہ آپ کو یہ دن بھی یاد رہے گا کہ جب آپ یہاں تشریف لائے تھے تو بزنس کمیونٹی نے ایکسچینج گزارشات آپ سے کی تھی, اور جب انشاءاللہ جب اعلیٰ منصب پہ ہوں گے تو FPCCI کو بھولنا چاہیے گا تاکہ آپ بار بار آئیں گے, کیونکہ سر ہماری معیشت ٹھیک ہوگی تو سارے معاملات چلیں گے. سر کب تک ہم کشکول لے کر دنیا کے آگے پھرتے رہیں گے؟ سر ود دیز فیو ورڈ سر
It is an historic day. इंशाल्लाह होपफुली ये जब इमारत सर उठाएगी और आपको भी याद रहेगा कि आपने एक 23 मंजिला इमारत की बुनियाद रखी थी जिसका काम मईशत की डेवलपमेंट थी, तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ख्र होगा। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया मियाँ अंजुम निसार साहब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मियाँ नासिर हयात मखदूम जो कि साबिक सदर FPCCI हैं और पॉलिसी एडवाइज़री बोर्ड का क़याम इनके अंडर में पिछले 2021 में अमल में आया। नासिर हयात मखदूम साहब। जी, बिलावल भुट्टो साहब, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यंग लीडर, खूबसूरत शख्सियत, मिनिस्टर्स, ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मुझे बताया गया टाइम बहुत कम है, मैंने 3 बातें करनी हैं। अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो प्राइवेट सेक्टर को आपको लेना होगा, और वो नहीं जो गिना चुना आपके पास आता है, अपने काम कराता है और निकल जाता है। अब एक इन्वेस्टर्स काउंसिल बनी है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब है, मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, आर्मी चीफ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर नहीं है। तो जिसने मुल्क चलाना है वो नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, मैं 1 साल और 2 महीने प्रेसिडेंट रहा। मैं ये समझता हूँ इस मुल्क को ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक आदमी चाहिए, कुछ ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, जो बाख्तियार हो और करना चाहता हो। ये पॉलिसी बोर्ड भी इसी सिलसिले की कड़ी थी, क्योंकि फेडरेशन का एक रेफरेंस बड़ा ख़राब था कि यहाँ कोई काम नहीं होता। तो यूनुस जागा साहब जो सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी पावर से रिटायर हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपके यहाँ बड़ी इंटरफेरेंस है तो मैं ये काम नहीं करूँगा। तो मैंने उनको यकीन दिलाया था कि हम आपको कोई बग़ैर इंटरफेरेंस के फ्री हैंड देंगे। वो बग़ैर किसी सैलरी के उन्होंने काम को संभाला, बोर्ड बनाया। आज हम रिसर्च कर रहे हैं, 12 पेपर लिख चुके हैं और हमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी 1-2 प्रोजेक्ट दिए हैं जो हम कर चुके हैं। आखिरी बात यह है कि एक जो बिज़नेस का इदारा होता है, चैम्बर फेडरेशन, वहाँ लोग समझते हैं कि यहाँ इकरा परवरी होती है, क्वालिटी नहीं है। ये बात सही है, क्योंकि हमारा जो ट्रेड ऑर्डिनेंस है वो इस बुरी तरह इतना पुराना, इतना फरसूदा है कि उसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो उसकी वजह से जो सही इदारा है वो भी बदनाम होता है। अब हमको यहाँ एक बिल्डिंग बनानी है 24 मंजिला, जिसमें बेसिक काम तो आपने कर दिया, जो कि 20 साल से हमारा पेंडिंग था और आपके आते ही ये काम हो गया। तो इसमें एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें 50 करोड़ रुपए या उधार दे दे सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट। सिंध गवर्नमेंट दे दे तो बेहतर है, जो हम 4 साल में बिल्डिंग जब निकल आएगी तो वापस कर देंगे, या हमें 5 फ्लोर बेचने की इजाज़त दी जाए ताकि हम ये बिल्डिंग को यहाँ एक लैंडमार्क बनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नासिर हयात मखदूम साहब। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है, आज की तकरीब यहाँ पर फेडरेशन में 2 बिल्डिंगों का संग बुनियाद रखने की तकरीब है, जिसकी अनवीलिंग सेरेमनी यानी कि तकरीब नकाब कुशाई अभी चंद सेकंडों में होगी। 2 बिल्डिंगें हैं, एक हम डेडिकेट कर रहे हैं पॉलिसी एडवाइज़री बोर्ड को, मुस्तकिल उनके अंडर होगी। वहाँ पे पॉलिसी एडवाइज़री बोर्ड अपना काम करेगा। दूसरी हम कर रहे हैं यहाँ पे एक एनेक्सी टावर बना रहे हैं, जिसमें डिस्प्ले सेंटर भी होगा और जदीद सहूलियात मैसर होंगी ताकि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। और इस बिल्डिंग का जनाब बहुत मुश्किल से नक्शा पास कराया गया है, जिसमें नासिर हयात मखदूम साहब की बड़ी काविशें थीं, बड़ी कोशिशें थीं, जिसके बाद ये नक्शा पास हुआ है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेहमान खुसूसी बिलावल भुट्टो साहब से, इरफान इकबाल शेख साहब से, अंजुम निसार साहब से, और फ्रंट 1 सेकंड सर, फ्रंट रो में जो बैठे हुए हैं कि वो तशरीफ़ ले आएँ ताकि जी आप जी खालिद अमीन साहब जी जी किसी को मालूम ही नहीं है, इधर से सर, मेरे दोस्त सर ये किसी को ये मालूम नहीं है कि ये क्या चीज़ हुई है। ये ख्वाब मोहतरमा शहीद भुट्टो का, बेनज़ीर भुट्टो का था। 1995 में उन्होंने, जरदारी साहब साथ थे, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। वहाँ पर मैडम ने
यहाँ चौक से और बोर्ड पर बताया कि एक्सपोर्ट की ज़रूरियात क्या है। ये आज जो कुछ भी हो एक्सपोर्ट की कोई बात नहीं। ये 28 साल पहले 1995 में मैंने शुरू किया और करते 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 कहीं से सपोर्ट नहीं मिली, न फेडरेशन से मिली। प्लीज़ प्लीज़ अब प्लीज़ 2 मिनट है, अरे शॉर्ट तो होना ही नहीं है, क्योंकि लोगों को अगर मालूम नहीं होगा तो क्या होगा। ये एक्सपोर्ट रिसर्च सेंटर की बात हो रही है जिस पे कोई गुफ्तगू ही नहीं। ये मैडम का ख्वाब था, ये जरदारी साहब का ख्वाब था। इसमें नासिर हयात ये बैठे नासिर भाई, ये इनकी काविशें थी। ये इनकी थी काविश, ये थी मुराद अली शाह की, ये थी अब्दुल्ला शाह की। अब्दुल्ला शाह और मैं प्लान करते थे और फिर होते होते ये अब ये 23 मंजिला बनी है, जो बननी चाहिए 75 मंजिला। आपसे इन्होंने क्यों मांगे हैं 50 करोड़? इनको चाहिए कि ये 1 अरब 50 करोड़ मांगे। आप स्कूल को देते हैं, आप हॉस्पिटल को देते हैं, आप रोड को देते हैं। जिसने आपकी इकोनॉमिक्स को, जिसने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, उस पर किसी ने बात ही नहीं की। कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी? एक्सपोर्ट बढ़ेगी कि जब एक्सपोर्ट रिसर्च सेंटर बनेंगे, और वो 28 साल में एक दफ़ा बना है। तो मेरी गुजारिश है कि मैं आपके जो सुमर साहब वहाँ बैठे और एक बिलावल जुनेद भाई कहते हैं कर कर के मिन्नतें, कर कर के मिन्नतें, बिलावल तेरी आदत बिगाड़ दी, दानिस्ता हमने तुझको सितम गर बना लिया। और एक मैंने शेर सुनाया था, जरा से वेट जुनेद भाई वेट, इतने जालिम ना बनो। आपके लिए अर्ज है कि इतने जालिम ना बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे? क्या आप अपनी वालदा का ख्वाब, आप मुझे अलहदा वक्त दें। इनमें से बेचारों को, ये सब बहुत मेहरबान है, इन बेचारों को तो मालूम ही नहीं है कि आपकी वालदा का ख्वाब क्या था। तो क्या आप कमिट करते हैं कि मुझे आप वक्त देंगे? और क्या ये कमिट करते हैं कि 1 अरब 50 करोड़ देंगे? नहीं, ये देंगे। आप क्या इंडस हॉस्पिटल को नहीं देते, रोड्स को नहीं देते, सड़कों को नहीं देते, एजुकेशन सिटी को नहीं देते? ये सर इनको तो बोले बार बार पीछे से यूं कर रहे हैं, ये कोई बात है? और आपकी फ्लाइट रुक सकती है। वादा वफा न कीजिए, वादा तो कीजिए। मैं ये तो कह सकूं कि मुझे इंतज़ार। देखें साहब, एक ब्रिगेडियर साहब हैं, एक ये हैं, अल्लाह जाने इनको तो पता ही नहीं है। मगर इससे पहले कि ये आपको यहाँ से उठाएं, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, वो मैं ज़रूर पहनाऊँगा। कहाँ देखें साहब, कितनी पाबंदियाँ इन्होंने मुझ पर लगाई हैं। मेहमान खुसूसी साहब बिलावल भुट्टो साहब, इरफान इकबाल शेख 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 साहब। अरे यार आ जाओ। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगी, वी आर गोइंग फॉर आवर अनवेलिंग सेरेमनी नाउ। आप ले जाएं, ले जाएं।
तकरीब रूनमाई के लिए तशरीफ़ ले आएँ। बहुत शुक्रिया बिलावल भुट्टो साहब। जी जी मैं बुला रहा हूँ। जी बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत मुख्तसर तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी से गुजारिश है कि अपनी सीटों पर तशरीफ़ रखें। बिलावल भुट्टो साहब तकरीर के लिए स्टेज पर आ रहे हैं, अपनी सीटों पर तशरीफ़ रखें। तमाम लोगों से दरख्वास्त है सीटों पर तशरीफ़ रखें, अपनी नशिस्तों पर आ जाएँ ताकि बिलावल भुट्टो साहब को तकरीर का मौका दिया जा सके। बिलावल भुट्टो साहब ने सर यार इनको बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से निकाला, जिसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपकी पुरज़ोर तालियों में मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिलावल भुट्टो साहब से कि वो बिलावल भुट्टो साहब। सर आई हैड द प्लेजर एंड ऑनर ऑफ receiving personally signed autograph of your grandfather as Prime Minister of Pakistan. Pleasure to meet you. Thank you. I will await Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया. It is an honor and a privilege and a pleasure to be here today and have the opportunity to engage with all of you at the FPCCI, and I am particularly pleased कि हमारा ये जो फंक्शन है खालिद साहब ने इतना इसमें रोशनी लेकर आया है और हमारा बूट को भी लिफ्ट किया है, और जो असल कहानी है इस इनिशिएटिव का और जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाब थी और जिस तरीके से ये होते होते हम इस हद तक पहुंच चुके हैं उसका पूरा कहानी सुनाया था। अब मैं अपना जो फॉरेन ऑफिस का तैयार किया हुआ स्पीच है मैं वो आपको सुनाऊंगा। President FPCCI Mr. Irfan Iqbal Sheikh Sahab, Senior Vice President FPCCI Mr. Suleiman Chawla, distinguished office bearers and members of the FPCCI, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a pleasure to be here among this eminent gathering of Pakistan's leading businessmen and industry stalwarts. I am delighted to be part of the FPCCI's important endeavor of establishing the Export Research Center in Karachi. I am confident that the center will greatly contribute to enhancing Pakistan's exports, particularly to new markets. At the heart of our economic journey lie the Chamber of Commerce and Industry, the lifeline of trade and commerce. Your role is invaluable as you act as the driving force behind economic growth, innovation, and employment generation. You play an integral role in our national's economic resilience, and together we shall forge ahead on the path of progress. Ladies and gentlemen, in an increasingly interconnected and interdependent world, the work of our diplomats has never been more pivotal to ensuring the prosperity and growth of our economy.
The Ministry of Foreign Affairs, therefore, has a crucial role in the promotion of Pakistan's interests through increased focus on economic diplomacy. We are your partners in ensuring rapid industrial development, increased investment, export-led growth, and navigating the challenges of rapidly transforming global economy. As we all know, Pakistan has immense potential for high and sustained economic growth, which remains untapped. With a youthful population of 220 million, vast stretches of fertile agricultural land, significant natural resources, and geographical location, Pakistan can act as a hub for transit trade and related investment. Yet, we lack stock of the past as we take stock of the past several decades, it is evident that our ability to translate the economic potential into tangible reality has been hampered by multifaceted challenges. These include over-reliance on imports, suboptimal performance of our export sector, and I appreciate the launch of this Export Research Center, as I am optimistic that it'll play a crucial role in the promotion of export-led growth of our economy. Chambers form an important part of our economic landscape. If we want to emerge as an economic powerhouse, we need to focus on catalyzing growth by consistently incorporating timely inputs and perspectives from all stakeholders, including the public and private sectors. We can drive forward the agenda of promoting exports and economic prosperity. And I'm happy to note that the FPCCI's active engagement in various trade agreements, including Pakistan's free trade agreements with GCC, Malaysia, Indonesia, and the UAE. It is the private sector that is ultimately responsible for producing an export surplus, adding value to our products, powering innovation, and staying ahead of the curve. I expect our business to focus on export-led growth, which can, among other things, require export surpluses, great diversifications in our export sector. Dear friends, the link between economic performance and diplomacy is mutually reinforcing. Effective economic diplomacy can contribute to sustained economic growth, stabilize self-sustaining growth trajectory, and expand commerce. The global economic landscape is constantly evolving, and as your foreign minister, I am acutely aware of the imperative to create an enabling environment for our businesses to thrive beyond our borders. I have always advocated that businessmen and women possess unique qualities that make them effective ambassadors in certain contexts. Their expertise in international trade and commerce and business enables them to bridge gaps between nations and foster economic cooperation. Additionally, you often act as our best representatives, particularly during trade missions and business meetings, showcasing our strength and values. I believe if we put business people in one room, they find their own ways to connect with each other and form strong economic partnerships, promoting cross-border investments which can sustain geopolitical shocks. Your role as our trade ambassadors can significantly contribute to enhancing international relations and driving economic growth worldwide. Ladies and gentlemen, as Foreign Minister, I am proud to share that over the past year and a half, I've placed special emphasis on fostering an environment that encourages growth, stimulates trade, and attracts investment in our foreign policy. On many overseas visits, I make an effort to protect and promote our entrepreneurs, business, and their integration into global value chains. In Iraq, we signed an MOU between the FPCCI and its Iraqi counterpart and established the Business Council. You should all benefit from these arrangements. Our diplomatic missions abroad play a key role when it comes to market diversification, and we have instructed them to promote our businesses in international markets and work with all of you to maximize opportunities. We have placed a special focus on emerging markets throughout our Look Africa policy. I am happy with the lead taken by our chambers in recent exchanges of business delegations with Ethiopia. Through infrastructure development and bilateral and multilateral agreements, we are enhancing connectivity.
I am happy to note that the Ministry of Foreign Affairs is making its utmost efforts to facilitate the businesses and resolve their concerns. For example, to address delays in attestations of documents, businessmen have now been allocated exclusive time slots at the Ministry of Foreign Affairs and at our camp offices. Our Economic Diplomacy Division is reaching out to all Chamber of Commerces to assist in exploring opportunities and surmount challenges through our missions abroad. To help us assist the business community, we encourage you to share concrete proposals with the Ministry of Foreign Affairs of what more we can do to engage with you directly and serve as your Foreign Office and as your embassies abroad. Dear friends, I am confident that our collective efforts would help us realize the dream of transforming Pakistan into an economic powerhouse. I have full faith that our chamber, in our chamber, and I wish you all the best in your endeavors towards a brighter and more prosperous future for our nation. In conclusion, मैं थोड़ा सा जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले सूबे सिंध में और उन एक्सपीरियंस से हम कैसे सीखे वफाक में कोई इम्प्रूवमेंट्स ले सकते हैं उन पे आपसे थोड़ी मिनट के लिए बात करना चाहूँगा. One of the elements from our Sindh government experience that I have found to be the most effective, not only in enhancing service delivery, enhancing the governance and transparency, has been the pursuit of the public-private partnership model here in Sindh. And our government's the People's Party's government efforts within the domain of public-private partnership has been internationally recognized. I know that international organizations are used to cite as examples of kitna bura hai hamara halat, magar is international survey ke mutabik, survey ne ek report hai, intelligence report ke naam pe Economist magazine ne karwaya tha, aur inhone analyze kiya पूरा जो एशिया में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे चल रहे हैं और वो जो हुकूमतें ये काम कर रही हैं और हमें सूबा सिंध को पूरा एशिया में नंबर 6th रैंकिंग दिया गया है और वो and I believe that we have witnessed, whether it is in the health sector, किसी ने Indus का example diya, there's an Indus hospital in Badin that is an example of public-private partnership, many hospitals that are an example of public-private partnership. Education sector में कुछ ऐसे schools हैं for example हमने ज़िंदगी ट्रस्ट के साथ जो public-private partnerships किए हैं यहाँ कराची में and आप उन schools को अगर देखेंगे वहाँ जिस तरीके से service delivery, governance, transparency में improvement आया है हमारा जो हमेशा एक शिकायत वैसे सिंध हुकूमत का होता आ रहा है कि हमें वो वसाइल नहीं मिलते मगर you don't, the other side of that story is कि पूरा वसाइल शायद ना मिले लेकिन हमने जो हमारा solution इसका निकाला वो भी public private partnership है जो हमारा infrastructure projects है चाहे वो सिंध में सड़कें हैं bridge हैं उनको भी हमने public private partnership model के through करवाया है. The Jhirk Mulakatiyar Bridge is the largest bridge on the Indus and that too is done by public-private partnership. Thatta Sajawal dual carriageway is a public-private partnership and it's already, the last I'd heard, it's broken even. I imagine it must be doing even better today. Anyway, the maqsad is ye sab kuch कहने का कि I believe there's a lot more that we can achieve together. If the government partners with the private sector, अब सिर्फ ये शहर कराची को देखें इतना बड़ा population है हमारा population पे आजकल बहस चल रही है इतना ज़्यादा बड़ा population है हमारा and जिस तेज़ी के साथ यहाँ का population है हम जो we can't keep up with the pace of demand whether it comes to utilities, whether it comes to infrastructure, whether it comes to water, whether it comes to sanitation. ये काम अगर हम मिल के प्राइवेट सेक्टर के साथ एक तरीक़ेकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू निकाल सकते हैं तो कराची जैसे सिटी में भी हम मिल के काम कर सकते हैं. So I really believe that this is the model to follow.
I'm very upset to hear کہ آپ کی نمائندگی کسی ایک فورم میں نہیں تھا, اور میں ضرور وزیر اعظم صاحب سے یہ بات کروں گا کہ اگر ایسے کوئی فورم ہے تو اس میں بزنس کمیونٹی کے اگر آفیشیل نمائندگی نہیں تو آپ آنریری نمائندگی دے سکتے ہیں, آپ میٹنگز ان کے ساتھ بلا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب صدر زرداری ملک کا صدر تھا تو بزنس کمیونٹی کا ایکسیس پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹس ہاؤس, کوئی ایسا اکنامک پالیسی نہیں ہوتا تھا جس سے وہ آپ سے مشورے کیے بغیر کا فیصلہ لیتا تھا. چاہے وہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہم کر رہے تھے یا ہم بجٹس بنا رہے تھے یا ہم پروجیکٹس, جو بھی فیصلے, جو بھی پالیسی, چاہے وہ ٹیکسٹائل پالیسی ہو, چاہے وہ ہمارا ایگریکلچر پالیسی ہو, چاہے وہ ہمارا شہر ہو, ایوری سنگل ڈیسیجن میں صدر زرداری صاحب کا یہ اپروچ تھا کہ he didn't believe that he had the answer to everything. He would engage with the business community and together ہم ان مسائل کا پرابلمز نکال سکتے تھے. اور اس وقت شاید ہمارا میڈیا کے دوستوں اس دور کا زیادہ تنقید کرتے تھے, مگر تاریخ نے اب یہ ثابت کر دیا کہ اگر پاکستان کا ایکسپورٹس ریچڈ ہسٹورک لیولز تو وہ تب تھا جب صدر زرداری پاکستان کا صدر تھا. اور اگر ہم نے ایک بار پھر ایکسپورٹ ڈریون, جیسے آج کا ہمارا ایونٹ بھی فوکس ہے اور سب کا زور ہے, یہ ہمیں آپ کے تقریر میں آپ کہہ رہے تھے یہ تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو آپ کو 90s کے دہائی میں ادھر چاک بورڈ پہ چارٹس بنا کے لیکچر دے رہی تھی کہ ہمیں ایکسپورٹ گروتھ کی طرف جانا چاہیے. یہ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا زور رہا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فوکس رہا ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکارڈ میں ہے. تو اب اگر پاکستان کا معیشت کو ہم نے بچانا ہے, and I agree with you, despite some impressive achievements, particularly in the last days of this government when it comes to the IMF and our foreign investors, the 8-10 months ahead are looking very difficult for the average citizen of Pakistan. And we have to find out-of-the-box solutions, partner with the private sector, and meet these challenges head-on. I'm incredibly grateful to the FPCCI and to all of you for having me here today. And I wish I had the opportunity to spend the rest of the day with you. But I have been summoned to Islamabad, so I must depart. But I do request that as soon as this assembly ka ye issues khatam ho jaye aur assembly dissolve ho jaye, to main Nasir Shah sahab, Tarheju sahab se request karunga ki I'd love the opportunity to either come to you or have you come to Bilawal House so we can discuss in detail, perhaps over a meal or something, the various challenges that we face. And I am optimistic. Challenges to bahut hi zyada hain, مگر پاکستان نے ماضی میں بھی سارے چیلنجز کا مقابلے کر کے آگے بڑھے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جنریشن میں آپ کو رزلٹس دیں گے. تھینک یو. Thank you, Bilawal Bhutto Sahab, for your thoughtful remarks. میں درخواست کروں گا